Now, domain name system. So the broad idea is there are different web pages or different resources which are there on the World Wide Web. Now, how do I access it? So I access, so there, like you have an address, I have an address. Similarly, every website has an address. So this system of web address or IP address for website is what we call as domain name system. Now, why this domain name system was required? Now, like mobile numbers, every website had an IP address, which is something more in name of number. Now, just to give you a simple example, whether it's easier to remember names or it's easier to remember numbers. So you would be able to realize, suppose our names, all our names were numbers, then would it be possible to remember the number or remember the name? It's easier to connect with names rather than numbers. So the various websites or web pages which were there on World Wide Web had an address which is called IP address, which is something like 3.7.82.249, right? So how these IP address are arranged or developed, we are not going into that technicality. We are just, understanding. So these IP address were maintained in form of phone book in the internet. Okay. So this phone book is basically is what domain name system. Now, this phone book might be changing frequently because suppose the web page of my university, I'm a PhD scholar in National Law School, Bangalore. So the web page of my university has an IP address at present is 3.7.82.249. Suppose at a later point of time, the IP address is changed to 66.235.200.113. So the phone book which we have will be required to be changed for obvious reason. So if my mobile number changed, I inform you my mobile number has changed, and then you change my mobile number, correct? Now, is it easier to remember mobile number of your friends or search the name of your friends on your mobile phone? For obvious reasons, the names. So similarly, this domain name system which developed, which helped management of various resources which are available on World Wide Web more efficient. Now, this domain name system was broadly introduced by Paul V. Moka-Petris from Information Sciences Institute of University of South California. So it's just a factual information that domain name system, which was initially used for ARPANET, was developed in 1983 by Mr. Paul. Now, there are various hierarchies of domain name system. We would not go into that. What we will broadly try and pick up is broadly what is domain name system, right? So we'll try and understand it. What we are able to see here, we have broken down. So what is this whole? Please try and understand. This is what is uniform resource locator. When we were talking about World Wide Web, we just talked about the address. So the full address is what? Uniform resource locator. So any resource on the World Wide Web or on the internet can be, identified through uniform resource locator. Okay. Now, this complete is the uniform resource locator. So how does this URL begin with? It begins with the protocol. Now, protocol simplistically as a term means protocol is a set of rules. So what is protocol? Protocol is set of rules. So what is this hyper transfer, HTTPS, hyper transfer, text protocol. So this HTTPS which is there, it is basically for the purpose of how do you request any information on World Wide Web, right? So what is this? HTTPS. So it is a protocol which is used for seeking any information on World Wide Web, right? Now, the next part is www, which is World Wide Web. This is also called subdomain. This is also Yes, called, sir. yes, yes. So what does S represent in HTTPS? S represents secure. And so what is the difference between HTTP and HTTPS? Yes, very good. So HTTP, text transfer protocol. So broadly, HTTP and HTTPS, the difference is
that if it's just HTTP, then that, just a second, let me show it on the second slide. You will be able to understand. 1 minute. Thank you so much for the query. It's a very good query because those of us who are from non-technical background might not understand. So broadly, how does DNS works? Let's first understand that, and then we'll go back to talking about it. So what we are able to see is, you know, this is your computer, right? On the left, you are able to see a computer. Now this computer has a web browser. So what is web browser? Web browser is a software which help you access web pages. Now, do we enter the IP address? The answer is no. How do we search? We write www.google.com. Correct? We don't write the IP address. But then the DNS does not work that way, or the World Wide Web does not work that way. It does not understand what is, what is the address of a particular website, say for that matter, www.google.com. So what happens? Your web browser, first of all, sends this web page, whatever you have requested, to DNS server. Now, this DNS server, what it does, it finds out the IP address of this, URL. For this URL, what is the IP address? So this DNS server will search for this IP address and it will send this IP address to your web browser. Okay. Now, once this IP address is sent to your web browser, then it will request this IP address in the internet. So IP address is, so suppose if you want to send a, mail or post to my home, what you'll do, you'll write my address and send me, right? And that message will reach my home. Now, whatever the message you have sent, I would give a response to that. So I would give a response to that. That's what is happening. So once I receive the IP address, so basically what I am doing, I am requesting a specific computer resource which is stored at the IP address 198.661.190.243. Now this will go to server or World Wide Web. Wherever this address will be, it will go to that place and it will request for that web page. Now, this communication you are able to see here, it's written HTTP response. Now, if this is HTTPS, so what is going to happen? The request which you will send for this address will be encrypted. One more time. So if you, encryption, you understand? Encryption, decryption, cryptography, the science of encryption and decryption. So what is encryption means? There you will be using some encryption technique for encrypting the information so that any person cannot read the message which you are communicating. So when we talk about this HTTPS request, so if this is an HTTP, then it will go as a plain text. So if there is a hacker, the hacker will be able to read what message is being sent from your web browser to the server. But if it is HTTPS, then the request which you are sending, it will be broadly encrypted, and therefore a hacker would not be able to read unless the hacker has a key. So this request for this website will be encrypted. It will be random number. It will reach the server. It will be decrypted. Whatever that web page is, it will be responded back. So that's the difference between HTTP and HTTPS. So in HTTP, there is no encryption. It's not secure communication. Anybody or any hacker, for that matter, will be able to read what communication is happening. But if you're using HTTPS, then that communication is secure. Therefore, it's always recommended that whenever you're using banking services or any financial services, you should always ensure that it is written HTTPS. Everyone, were we able to understand? Sir, this DNS server works on IP address only. Domain name system is for the purpose of identification. Okay. Just DNS is for the purpose of identification of location of any computer resource on the internet or World Wide Web. DNS, the DNS का पर्पस ही यही DNS का पर्पस ही यही है कि वो आपको हेल्प करता है
कि पूरे इंटरनेट में या वर्ल्ड वाइड वेब में कोई रिसोर्स कहाँ स्टोर्ड है, और उसको जाके रिक्वेस्ट सेंड करना, एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट दैट वेब पेज इज सेंट ऑन योर कंप्यूटर एंड डिस्प्लेड ऑन योर वेब ब्राउजर। ओके। तो सर डीएनएस हमारा पैकेट स्विचिंग टेक्निक यूज कर सकता है ना, और तो कोई नहीं? नहीं नहीं, आप कंफ्यूज ना करें। पैकेट स्विचिंग टेक्निक, ये आप पहले पहले तो ये समझना पड़ेगा आप किस रेफरेंस में बोल रहे हैं। ठीक है। और पैकेट स्विचिंग का यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है, ये कैसे काम करता है, इट्स ब्रॉडली अ क्वेरी। ठीक है। अब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे बात की डीएनएस के बारे में, तो यहाँ पे हमने कहा कि हर कंप्यूटर रिसोर्स, आपके कंप्यूटर का, मेरे कंप्यूटर का, आपके मोबाइल फोन का, हर जो सिस्टम आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसके उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस है। जैसे आपका आधार है, मेरा आधार है, तो ये आईपी एड्रेस के तौर पे आप समझ ले कि हर वो डिवाइस जो इंटरनेट पे कनेक्टेड होता है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। बट क्या होता है, हमारे लिए उस आईपी एड्रेस को याद रखना डिफिकल्ट है। तो उस आईपी एड्रेस को, जैसे हमें क्या है, दुनिया में लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, अब हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखना डिफिकल्ट है। तो हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम डिवाइस किया जिसमें हमने कहा कि मुझे नंबर नहीं याद रखने, बट मैं क्या है, मैं नाम याद रखूंगा। वो नाम क्या है, जैसे एग्जाम्पल हो गया www.nls.ac.in। बट कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर ये www.nls.ac.in नहीं समझता। वो क्या समझता है, वो आईपी एड्रेस समझता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आईपी एड्रेस खोजना पड़ेगा। वो आईपी एड्रेस कैसे खोजेंगे, तो एक सिस्टम हमने डिवाइस किया जो डीएनएस सर्वर है, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर, जिसमें ये इंफॉर्मेशन हमने www.nls.ac.in इंफॉर्मेशन भेजा डीएनएस पे, और हमने कहा कि आप, वेब ब्राउजर ने कहा कि आप हमें इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस भेजिए। फिर डीएनएस सर्वर ने वो आईपी एड्रेस आपके वेब ब्राउजर को भेजा। तो वेब ब्राउजर ने क्या किया, आपका वो आईपी एड्रेस को आपका वेब सर्वर या वर्ल्ड वाइड वेब पे भेजा, और रिक्वेस्ट किया कि इस एड्रेस पे जो भी वेब पेज है आप वो मुझे भेज दें, और वो वेब पेज आके आपके वेब ब्राउजर में खुल जाता है। बात समझ में आई? यहाँ पे आप पैकेट स्विचिंग से कंफ्यूज ना करें, डीएनएस का कंप्लीटली डिफरेंट पर्पस है। ओके सर। ओके। सो डीएनएस में सिर्फ आपको हेल्प करता है आपका वेबसाइट का नाम से आपके आईपी एड्रेस को रिलेट करने के लिए। एवरीवन, एंड वर वी एबल टू अंडरस्टैंड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर? कि जब हमने सिक्योर टर्म यूज किया, तो वो HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, सिक्योर मींस जो भी कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे आपका सर्वर के साथ, वो सिक्योर होगा। सिक्योर कैसे होगा, वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होगी। प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेशन नहीं होगी, साइफर टेक्स्ट में कम्युनिकेशन होगी। तो आपके कंप्यूटर पे इनक्रिप्ट होगा, सर्वर पे जाके डिक्रिप्ट होगा, और आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो सर्वर उसको फुलफिल करेगा। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, प्लेन एंड सिंपल। जिन्होंने ये सवाल पूछा था HTTPS वाला, उनको समझ में आया? यस सर। ठीक है ना? सो वेरी क्विकली हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डोमेन नेम क्या है। वेरी क्विकली, ये पूरा जो एड्रेस है ना, यहां से यहां तक, ये है आपका यूआरएल। ठीक। ये पहला हो गया प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, किस टाइप का ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं, ये हो गया सब डोमेन। दिस इज ऑल्सो योर सोर्स। क्या होता है आजकल वेबसाइट्स क्या है ना, काफी सारे प्राइवेट सर्वर्स आते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, सारी वेबसाइट्स आपको वर्ल्ड वाइड वेब पे नहीं मिलेंगी। कई वेबसाइट्स के नाम जो है आपका www से शुरू नहीं होता है। उसका मतलब क्या है, ये वेबसाइट जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब पे स्टोर नहीं है, बट किसी प्राइवेट सर्वर पे स्टोर है। समझ पा रहे हैं आप? आप कई बार नोटिस करेंगे कि कई वेबसाइट्स का नाम www से शुरू नहीं होता। तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब है कि वो वेबसाइट आपका वर्ल्ड वाइड वेब पे नहीं है, किसी प्राइवेट सर्वर पे होस्टेड है। ठीक है। उसके बाद ये जो आपका नाम रहता है, ठीक है, ये है डोमेन नेम। ठीक है। ये डोमेन नेम, जैसे मैंने कहा nls.ac.in, सो nls.ac.in, www.nls.ac.in, एग्जाम्पल ही देख लेते हैं वेरी क्विकली। आई होप सबको ये देख पा रहे हैं, क्योंकि ये HTTPS क्या हो गया, हमारा प्रोटोकॉल हो गया कि हमारा सिक्योर कम्युनिकेशन होगा कि अनसिक्योर कम्युनिकेशन होगा।
www हमारा सब डोमेन है या लोकल डोमेन है, कि एक्चुअली कहाँ पे ये वेब पेज स्टोर्ड कहाँ पे है, ठीक है। ये ac.in बेसिकली क्या है, टॉप लेवल डोमेन है। टॉप लेवल डोमेन हमें ये बताता है कि बेसिकली किस तरीके की वेबसाइट है। तो जैसे आपका एग्जांपल है google.com, सो .com स्टैंड्स फॉर कमर्शियल वेबसाइट, ठीक है, तो वो कमर्शियल वेबसाइट है। .ac.in ये क्या है, ये एकेडमिक वेबसाइट है। .edu.in ये क्या है, ये भी एकेडमिक वेबसाइट है या एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है। NLS क्या है, सो दिस इज द डोमेन, एक्चुअल डोमेन है। सो ये टॉप लेवल डोमेन नेम है, ये सेकेंडरी डोमेन नेम है। सो nls.ac.in ये पूरा आपका डोमेन नेम है। ये वर्ल्ड वाइड वेब आपका लोकल डोमेन है या सोर्स डोमेन है, जो आपको ये बताता है कि आपकी वेबसाइट कहाँ स्टोर्ड है। HTTPS ये बताता है आपका प्रोटोकॉल कौन सा है, ठीक है। अब एक वेबसाइट में कई मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। तो वेबसाइट इज व्हाट, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब हमें स्पेसिफिकली किस वेब पेज पे जाना है वो कैसे पता चलेगा, एब्सोल्यूट पाथ से। बट ये पूरा मिला के क्या है, ये पूरा मिला के है यूआरएल। हम लोग समझ पा रहे हैं एवरीवन, एनी क्वेरीज हियर? बस यही है उसमें, ये पूरा जो है ये यूआरएल है एक स्पेसिफिक वेब पेज का। जैसे मेरे रूम का एड्रेस तो ये होगा ना, मेरे घर में यू नो नॉर्थ ईस्ट में जो रूम है वो मेरा रूम। तो उसी तरीके से अगर मुझे प्रोग्राम पीएचडी इन लॉ सर्च करना है एनलेस की वेबसाइट पे, तो ये पूरा यूआरएल है, ठीक है। उसमें एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल है, आपका वर्ल्ड वाइड वेब लोकल डोमेन है या होस्ट डोमेन है, जो आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट कहाँ होस्ट हुई है। फिर आपका nls.ac.in ये आपका पूरा डोमेन नेम है, जिसमें टॉप लेवल डोमेन नेम ac.in है, जो ये बताता है किस तरीके की वेबसाइट है। NLS एक्चुअल नेम हो गया, ठीक है। और ये आपका एब्सोल्यूट पाथ हो गया कि एक्चुअली आपकी वेबसाइट है कहाँ। एवरीवन, I hope we are able to understand and we have also seen how DNS works. डोमेन नेम और यूआरएल के बीच में भी हमने डिफरेंस समझ लिया कि एनएलएस डोमेन नेम है, ac.in आपका टॉप लेवल डोमेन नेम है। सो ये टुगेदर इज व्हाट इज योर कंप्लीट डोमेन नेम। www इज सब डोमेन और योर होस्ट डोमेन प्रोटोकॉल, और ये पूरा पाथवे है एग्जैक्टली कौन से वेब पेज हमें एक्सेस करना। ओके एवरीवन, I hope everyone was able to appreciate. Now, very quickly, एक important case laws है relating to domain name. So, Satyam Infoway versus SIFI Solutions 2004. ये बहुत ही important judgment है from the perspective of whether domain name can be treated as trademark. So, in this, very clearly, the Supreme Court has held that domain name are no more address for computers on internet, but they have become a means for communicating the mode of carrying commercial activity, and these domain name may be considered as service marks under section 21Z, which refers to marks, definition of mark. Okay, so domain name may be considered as a mark. So domain name is no more, the domain name is no more merely address for a computer resource on the internet, but it has now also acted as uh, trademark. Everyone, so this was something which was held in Satyam Infoway versus Sifinet. Very quickly, we'll talk about surface link, deep link, and framing. And broadly, there are different. URL is what? It's a link. Now, whenever you go to any website, like we have seen, so when you are on the home page, right? So you are in the home page of the website. So the URL or the link of the home page is what we understand as surface link. Okay, the link or the URL of the home page is what we understand as surface link. Whereas the internal pages of a website, if like we have seen the PhD, right? We have seen program PhD. So what is this? This is a deep link, because this is an address for a specific web page, right? So if it is home page, the URL of home page is surface link, and URL of internal pages of website is deep link.
Now, this becomes very, very important from the perspective of commercial aspect because most of the websites they earn revenues through advertisements, and then advertisements are based on the number of clicks these websites get for their homepage. So, the more number of clicks these websites they get for their homepage, the more chances are that different companies will put advertisements on their website, right? So if somebody uses the deep link of your website, then broadly what it is doing, it is reducing the number of clicks on your homepage, and therefore in turn also reducing the chances for your website to get more number of advertisement. So therefore use of deep link for commercial interest without the approval of the website owner would can amount to copyright infringement, right? Can amount to copyright infringement. Now, for this purpose, we also have a judgment in form of PVR Limited versus Just Dial Limited, where it's very clear. The court, Delhi High Court, held that the use of deep links without the consent amounts to copyright and trademark infringement, right? So nobody should be permitted to use deep links without the consent, right? And that has been clearly held up in PVR versus Just Dial. I'll encourage everyone to download this judgment and read. Now, computer programming language and computer programs. So broadly, Excuse me, very sir. quick. Yes, yes, So sometimes it's written .org and .net. correct, correct. So what's the meaning of those words? Right. So when we talk about .org, it means organization. So initially, when domain name system was developed in 1983, there were 6 original domains, as you are able to see. .edu for educational, .gov for government, .com for commerce, .mil for military, .org is for organization, .net is for network, .int is for international. Okay. So these were the 6 original domain names, domains which were created. There were various others. Now these could be generic domain names or they could be country specific domain names, right? Like I talked about endless.ac.in. So what we are able to see, AC, academic institution, .in means an, Indian institution. Are we able to understand? The Yes, जिन्होंने sir. सवाल पूछा था उनको समझ में आया? Yes, sir. जी, fine, fine. Yes, if anybody has any questions, please feel